Auzubillahi मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ कहीं भी रखे अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। क्लास 7 की इंग्लिश हम कर रहे हैं और इसका है चैप्टर नंबर 6 द मशीन स्टॉप्स, पेज नंबर 72 पे। तो एक बड़ी ज़बरदस्त सी ये स्टोरी है कि कैसे जो है वो एक मशीन रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो अगर आप लोग क्लास में इसको रीड आउट ऑलरेडी कर चुके हैं और उसकी ब्रीफिंग नहीं चाहिए, दैट इज़ अनदर थिंग। मगर अगर किसी स्टूडेंट को इसकी ब्रीफिंग चाहिए, सो वी विल डेफिनेटली डू इट्स ब्रीफिंग। करेंगे इसको कि जो है वो क्या है इस चैप्टर के अंदर। और हमेशा की तरह यही बात कहूँगी कि लाजमी जो है वो ऑथर के बारे में पढ़ा करें। इसके ऑथर हैं एवरेज एक्सट्रैक्ट E.M. फॉस्टर, मतलब E.M. स्टैंड्स फॉर एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ डेथ तक इनकी जो है वो आप ज़रूर स्टडी किया करें इसको कि ये कौन है। लाइक लिखा हुआ इन्होंने, ही वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ईजीएस्ट। मतलब ये ऐसे भी लिखते थे और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे। ट्रैवल इन्होंने जो है वो यूरोप किया है और विज़िट किया है इजिप्ट को भी। और एज जो है ये नॉमिनेटेड हुए थे नोबल प्राइज़ के लिए इन लिटरेचर इन डिफरेंट 13 डिफरेंट ईयर्स। मतलब 13 सालों में जो है ये 13 साल जो है वो डिफरेंट नॉमिनीज़ में इनको जो है वो इनका नेम नॉमिनेट किया गया था। ये ज़रूर पढ़ा करें, ऑथर हो चाहे वो राइटर हो चाहे वो किसी पोम के पोएट हों, उसके बारे में लाजमी एक दफ़ा इसको देखा करें। इसके जो है वो वर्ड्स टू नो देख लेते हैं पहले। कॉरिस्पॉन्डेंट्स, डॉडलिंग, इम्पॉर्चुनेटली, आइसोलेशन, मेलोडियस, नॉनसेंस, pneumatic न्यूमेटिक पोस्ट, रेडियंस एंड सॉडल्ट। अच्छा, कुछ जो है वो इसके बुक में से थे, मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग देख लिए थे। हेक्सागॉन किसे कहते हैं? 6 साइडेड शेप यानी मुसद्दस जिसे हम कहते हैं। रेडियंस मीन्स लाइटेड, चमक। थ्रॉबिंग कहते हैं पल्सिंग यानी धड़कन को। मेलोडियस मीन्स ब्यूटीफुल वॉइस यानी सुरीली आवाज़। स्वॉडर्ड मीन टाइटली ग्रैब यानी लिपटे हुए। इनॉर्मसली मीन्स टू मच, बहुत ज़्यादा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बहुत ज़्यादा है वैसे तो बुक में, मगर सबसे जो इम्पोर्टेंट था कि जो लेडी थी इस चैप्टर के अंदर, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसका कि जो वुमेन है शी इज़ अबव 5 feet हाई विद अ फेस एज वाइट एज फंगस। उसका फेस इस कदर वाइट है जैसे कि फंगस की तरह का होता है। तो ये तो हो गई शॉर्ट सी एक इसकी ब्रीफिंग चैप्टर की। चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले है एक्सरसाइज नंबर 1, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु आर मारिया एंड कुनू? Why can Maria only talk to Kunu for 5 minutes? How does Maria move around her room? Why does not Maria want to travel in the airship? What does Kunu say that shocks Maria? What details do we learn about the rooms that people live in the underground world? स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हु आर मारिया एंड कुनू? मारिया इज़ अ वुमेन एंड कुनू इज़ हिज सन। Why can Maria only talk to Kunu for 5 minutes? Answer is I do, except anything important will happen for the next 5 minutes. For I can give you full 5 minutes, Kunu. How does Maria move around her room? In a mechanical chair. She moves in a mechanical chair. Why does not Maria to travel in the airship? Maria does not want to travel in the airship because she dislikes seeing the horrible brown earth and the sea and the stars in the dark. She also says she gets no ideas in an airship. She is separate from the real world because the world outside them machine is contaminated.
She is separated. Question number 5 is what does Kunu says that shocks Maria? Kunu says that he wants to speak to the mother not through the verism's machine. Maria is shocked that Kunu said negative about machine because Maria loves machine and she cannot hear anything wrong about machines. What details do we learn about the rooms that people live in the underground world? The rooms are small, hexagonal. They have some kind of ventilation. Music is played in the room. Each room contains a chair and a reading desk. And also, there are a lot of switches and there with which one can call for musical, food, clothing, etc. There are also speaking tubes and communication buttons so that she can talk to Kunu and other people. What details do we learn about the rooms that people live in the underground world? The rooms are small, hexagonal, and lit by a soft radiance, which can be turned up or down. They have some kind of ventilation system, not window in a bracket. Music is played in them. Each room contains a chair and a reading desk. Next exercise is answer the following with reference to context. And in the armchair, there is a swaddle lump or flesh, a woman about 5 feet high, with a face as white as fungus. Who is the woman? What does the description swaddled lump of flesh show about her? What does the comparison face as white as fungus shows about her? स्टार्ट करते हैं. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग देनी है आपने. कॉपी आप बुक से कर लीजिएगा. हु इज़ द वुमेन? मारिया इज़ द वुमेन. What does the description swaddled lump of flesh show about her? Swaddled lump of flesh show about her that she is not very fit. It seems like she does not move around much. She is wrapped up like a baby. What does the comparison faces as white as fungus show about her? It conveys the impression that she is pale, overweight, unhealthy, looking shapeless, and perhaps somewhat unattractive. Because she seems that I am as white as fungus, my color is so pale, I am overweighted, I am unhealthy, and I am shapeless. मेरी कोई shape नहीं है. I do not look more attractive and beautiful. B is Maria's next move was to turn off the isolation switch, and all the accumulation of the last 3 minutes burst upon her. The room was filled with the noise of speaking tubes. When does this happen? When does this happen? When Maria has finished to Kunu. जब मारिया जो है वो अपनी बात या अपना काम जो है वो कुन से ख़त्म कर चुकी थी, तब ये सब कुछ हुआ. C is she knew several thousands people in certain directions in human communication advanced enormously. How does Maria communicate with the people she knows? What kind of the people they communicate about? What does the author imply by the use of the phrase in certain directions? How could we view Maria's words a way of communicating as negative? सबसे पहला है हाउ डज मारिया कम्युनिकेट. मारिया कम्युनिकेट्स with the people she knows
through speaking tubes and screens. People no longer meet up in persons, they communicate about ideas. What does the author imply by the use of the phrase in certain device directions? Answer is the author seems to imply that human communication has not advanced in other direct by the use of phrase in certain direction. How could view Maria's world way of communication as negative? Maria's world says of communication do not include face-to-face interaction and seems to rely on small sound bites of information being shared by many people. Humans are sociable creatures, and Maria's world's machine seems to have isolated each human away from all others. Last one is question number D. The clumsy system of public gatherings has been long since abandoned. Neither Maria nor her audience stirred from their rooms. What is meant by the following phrase? System of public gatherings stirred from their rooms. Write three sentences out in your own words. Keep the meaning. तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जी इसका मतलब क्या है. That system of public gatherings, it means face to face meetings which in the world of the story no longer happen. Stirred from their room means move out of their room in the world of the story. Everyone stays in their own room all the time. This is now part number 1. The second one is straight from their room. Question number 2. About the write the sentence in your own words. Keep the meaning. The old way of meeting face to face was considered awkward and difficult and no longer happened. Maria and everyone else never left their rooms. Last one, that is E. His image in the blue plate faded. Kunu. He had isolated himself. One is what makes Kunu isolated himself. Two is what does isolated himself mean in the story. And the last one is how does Maria feel after this. So number 1 is what makes Kunu isolated himself. Kunu isolates himself when his mother tries to disgust him from visiting the surface of the earth because she feels that it goes against the machine. What does isolated himself mean in the story? It means that Kunu has turned on the isolation knob in his room so that no one can speak to him through the speaking tubes or through the blue plates. How does Maria feel after this? Maria feels lonely after this. दिस इज़ द बिगेस्ट लास्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. इतने ज़्यादा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमारे पास किसी भी चैप्टर में नहीं थे, बट वी ऑल हैव डन इन दिस चैप्टर. उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी. अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा. चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.